So, dear students, here I am back for you again. Today we are going to discuss with you two things. Number one is the grade threshold of October-November attempt for IGCSE O levels 7707 and AS level 9706 accounting AS and A2. Second thing which I am going to discuss about adjusted marks. So first let's talk about the adjusted marks. As I discussed with you that you are going to get your adjusted marks in these exams. Even in the past exams also you can easily take your adjusted marks from your school or from the Cambridge center, from wherever you have been enrolled for the exams. I have already put up a picture of my son. Actually, he got that much marks in chemistry actually, and the marks have been awarded to him. How adjusted marks has been developed actually, that whoever the teacher is going to be, who is going to check your papers, and he will mark your paper out of 100. Let's suppose he has given out of 100, he has given you 65 marks. And on 65 marks, you know that the grades, normal grade, it should be C or whatever you can call it as. Now, the average percentage of marks of that particular examiner will be compared with other examiners, and it has been taken up by the Cambridge that other examiners, their percentage threshold is higher than your child's, whatever the teacher who has checked your paper, the other teachers' average percentage marks are more than your paper, whoever has checked your papers actually. So what Cambridge will do, Cambridge will increase your raw marks, maybe 2% or 1%, and that will be known as adjusted marks. Same is the case that if a teacher has gone for strict marking, then his awarded marks will be compared, percentage of marks will be compared, whatever percentage he is getting all over, that maybe 40% students are getting 50 marks, but for other teachers in the same paper, because they have been given the papers, random papers have been given, they are getting 60%. Average percentage scored by the students are 60%. So the teacher who has checked the papers little bit more strictly, his marks will be adjusted accordingly with other teachers. So that will give a more better picture to the students that how the Cambridge is going to assess their marks, to give a more realistic marks for the students, so that they will feel at ease, and that is the credibility of Cambridge, or Cambridge board has basically given this new technique, has introduced this new technique, and it will be implemented in this exams also. Now if you talk about the grade threshold of October-November IGCSE 0452, it will be 23 out of 35 for O levels MCQs paper or IGCSE 0452, and for paper 2 out of 100 marks the grade threshold will be around 57 or 58. It will not be close to 60 because of the reason that there is a non-profit organization question also, and there is also a question of single entry system, and there is also a little bit question. Paper was not that easy. It is easy but not very easy. So 58, 57, that will be the range of A for our O-level exams for accounting subject. If you talk about AS, P1 you will be able to get 22 marks to get an A. That will be the grade threshold for all variants 2-1, 2-2 and 2-3. And for P2, for paper 2 out of 90 marks, you need to get 58 marks to get an A. It will not be 60. It will be around 58 for all the variants. It can be little changed also, but it is my perception that this should be the grade threshold for this particular result regarding the 9th of January. It is going to come on 9th of January. Secondly, the grade threshold of P3, that will remain at 42 out of 45. It will be the same because of the question of partnership changes. The grade threshold of P3 will not increase from 42 onwards. Maybe it will even more less than 42, but I believe that it will be 42. For paper 4, if you talk about, the grade threshold will be around 33. It has been 31 in the last exam, but now it is going to be 33 for all the
variants or 34 is the range, is it is the range between them, 33, 34 for all the variants, right? For the May, June, for the February, March, for the May, June exams, my session is going to launch in as online session. I am giving you my number also, and this session will include 2 classes every day. One online class which is free, absolutely free, one physical class if you want to join physically. But online students will get 2 classes every day because we have to cover the whole course, and along with the all past papers, the 10-year past papers. Otherwise, forget about accounting, forget about grade in accounting. That is why I'm telling you that students are reluctant to take up accounting, and accounting subject is going, to be honestly speaking, it is going down because students are basically engaged in other extracurricular activities and they are not focusing on the subject, which needs a lot of hard work, lot of practice, lot of time has to be given to the subject, and that is basically lacking, unfortunately. Secondly, my session in Greenhall, Barbertown and Johor Town, you can enroll in that particular session, and inshallah ta'ala you will get, I will try to make you equipped to get a better grade. Obviously not A star, because it is just a, what should I say, I don't want to befool you by saying that you will get A star, because it depends upon your hard work and your interaction with me, and that will give you a better result for that. Having said this, now I am going towards a different direction, which is very important for this particular scenario we have been facing regarding politics, political situation of the country, and the ethical values of our country. Problem is this, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे मुल्क में, because we belong to Pakistan, and I am extremely thankful to all the teachers and the students of Mauritius especially, who have basically appreciated me to that extent that I have no words to thank you. So that it's really an honor for me the way you have approached me, the teacher for Zimbabwe, Sir Peter, and other students also of Mauritius. So I'll happy to give you the guest of February, March also, but now I'm not going to upload the guest because nobody has basically reached me. No teacher has basically reached me from UK, from Australia, from Canada, from America. No one has basically reached me to give a guest of February, March 2025 A levels or O levels. So I want you to, I'm giving you my number. You can ask me for the guests, and inshallah ta'ala after 9th of January, I'm going to give you the guests through my WhatsApp number. You can directly ask me regarding the guests, because it is not going to be examined in Pakistan or Karachi or somewhere else. Although Multan, Karachi, Islamabad students, they are very much helpful and always in touch with me. I am extremely also thankful to them also. The problem we are facing is this, that हमारे मुल्क में करप्शन इस हद तक बढ़ चुकी है, फ्रॉड इस हद तक बढ़ चुका है कि हर फील्ड के अंदर, हर कारोबार के अंदर सवाए 2 नंबरी के और कुछ भी नहीं रह गया. आप प्रॉपर्टी को माफिया को देख लें, ठीक है, द होल प्रॉपर्टी माफिया. Either you will talk about any property tycoon, you know that how they have gathered the amount. अभी मेरे 2-3 केसेस चल रहे हैं न्यू लाहौर सिटी में, जैतून लाइफस्टाइल में, राइट. बल्कि आई एम गोइंग टू लॉन्च एन एप्लीकेशन in the NAB, and I am going to ask the other people who are facing problems regarding New Lahore City or any other problem. Inshallah ta'ala, I'll ready to help them, and we will together, this made an impact which will definitely give solution to those people who are affectees of this property mafia. Same is the case with the police structure. Unfortunately, we started believing, one of my friend who is very close to me, Professor Yaqub Chaudhary, he is basically head of department in a very renowned college. He's head of department of mathematics. He was of the view that our police is very corrupt. It's not like that. If police is not doing his job, then we all are basically doing the we are all are living in the same same scenario. Why is it so? I will give you explanation for that. आप किसी फल वाले के पास जाएं, वो कम तोलता है, तो बेहयाई जो है वो ये नहीं है कि आप यूके वाले जो है वो कम कपड़े पहनते हैं और वो कम वहां पे माशरे में बिगाड़ है. बेहयाई ये भी है कि आप जो है वो दूध में मिलावट करते हैं. बेहयाई ये भी है कि आप गोश्त बेचते हैं पानी वाला. बेहयाई ये भी है कि आप टीचर बच्चों से पैसे तो पूरे लेते हैं लेकिन काम जो है वो पूरा नहीं कराते.
बेहयाई ये भी है कि आपकी पुलिस, आपका जो पॉलिटिशियन है, आपको पता है कि वो पैसे लेके उसने काम, परफॉर्मेंस उसकी जीरो रहेगी। तो ये भी सब बेहयाई के अंदर ही आते हैं, कम तोलना, ठीक है जी, और दूसरों के पैसों पर नजर रखना। हमारे मुल्क में तो यही है, भाई भाई को खा रहा है, किसी को कोई परवाह नहीं है। तो गलत सही की तमीज तो हमारे मुल्क में खत्म हो गई है। आप ट्रैफिक को ही देख लें अपने बाहर निकल के, आपको ट्रैफिक से ज्यादा हो जाएगा कि ट्रैफिक सेंस हमारी और बाहर के मुल्कों की किस कदर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर है। और यही प्रॉब्लम हमारी इस वक्त बनी हुई है। तो मेरी तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, बच्चों से भी और पेरेंट्स से भी, कि बच्चे जब तक आप इस सब्जेक्ट के अकाउंटिंग के वाले से फोकस नहीं होंगे, अपने पास पेपर्स के प्रॉपरली हैंडल नहीं करेंगे, तो कोई दुनिया की ताकत भी आपका साथ नहीं देगी, कोई दवाएं भी काम नहीं करेंगी। क्योंकि दवाएं भी वही काम करती हैं जहां दवा भी हो। दवा होगी तो दवा काम करेगी, वरना वो भी काम नहीं करेगी। तो यानी आप अंदाजा इस बात से करें कि हालात यहां तक हमारे जो है वो पहुंच चुके हुए हैं कि एक हमारे ही प्रोफेशन के अंदर एक टीचर है जो अकाउंटिंग भी पढ़ाता है, जो बिजनेस भी पढ़ाता है, जो इकोनॉमिक्स भी पढ़ाता है, एंड ही नोज दैट ही इज बेसिकली competent in only one subject, but unfortunately he is going for all 3 subjects। तो क्या ये मुनाफकत नहीं है? क्या ये हराम नहीं है? क्या ये गलत नहीं है? क्या ये करप्शन नहीं है? ठीक है, आप ये कहते हैं कि हमारा जो आईजी है डॉक्टर उस्मान अनवर, ठीक है जी, मैं याकूब साहब की बात बता रहा था, मेरे दोस्त की, वो कहते हैं जी कि डॉक्टर उस्मान अनवर क्यों नहीं जॉब छोड़ देता, क्यों वो पॉलिटिकली एक्शन जो है वो लेता है, क्यों वो किसी की सुनता है? भाई वो हमें इंसाफ दिलाने के लिए खड़ा है। हमारे एहसान चौहान साहब भी जो आपके AIG हैं, इज ए वेरी गुड पर्सन, हिज सन हैज डन MBA फ्रॉम लम्स, बेटी उनकी FCPS है, आई मेट हिम। प्रॉब्लम ये है कि वो भी तो अपनी नौकरी कर रहे हैं, दे आर आल्सो डूइंग देयर जॉब्स। वैसे साहब आप भी तो अपनी जॉब कर रहे हैं, याकूब साहब आप अपनी जॉब कर रहे हैं, और आप अपनी जॉब के अंदर क्या अपने बॉस का हुक्म नहीं मानते? आप अपने बॉस के गलत हुक्म भी मानते हैं क्या? हम एज ए टीचर जो है वो क्या कहते हैं उसे, अपने जो हमारे जो क्या कहते हैं प्रिंसिपल है, उनकी बात को फॉलो नहीं करते? इवन के समटाइम्स इट हैपेंस कि वो गलत बात कर रहे होते हैं, आप बच्चों को देख रहे होते हैं कि बच्चे जो हैं वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, उनकी जो इखलाकी इक़दार है वो कम हो रही है, बट यू डोंट इंटरफेयर बिकॉज यू आर एन एम्प्लॉई, you believe yourself that you are working as an employee, which is not accurate, which is not wrong, which is not true actually, which is not right actually, because you have to say something if something is going wrong in front of you. So same is the case with IG sahab also. If you feel he is an employee, he is doing his services, जिस तरह आप एम्प्लॉई हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप टीचर हैं, तो आप भी तो कितने गलत काम देख रहे हैं अपने सामने होते हुए, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में, आप क्यों नहीं रोकते? फिर हर बंदा अपनी जगह पे, मुझ समेत जो है यही इसी चक्कर व्यू के अंदर फंसा हुआ है, इसी बॉक्स में फंसा हुआ है और उसके अंदर से बाहर नहीं निकल रहा। तो अनलेस कि वी विल नॉट कम आउट ऑफ आवर स्किन, देयर इज नॉट गोइंग टू बी चेंज इन दिस कंट्री। इसकी एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। लास्ट जो मेरा आपके साथ बातचीत हुई थी उसमें मैंने आपको ये बात बताई थी, ठीक है, बड़ी ओपनली बात बताई थी, ठीक है। देखें, मैं आपको बताता हूं कि एक कराची का एक ग्रुप है जिसे कोला कैम्ब्रिज के नाम से, आपको पता, कैम्ब्रिज OA लेवल ग्रुप। whenever I used to put up a guess on that group, they never allowed me to upload my guess in the group. Why? Maybe because the group leader, whoever has developed that group, वो कराची से बिलोंग करता है, वो कहता है लाहौर वाला टीचर मैं क्यों आने दूं, इसका गैस आता है, अगर मैं डालूंगा ये प्रमोट होगा। मुझे बताएं, कोई एक सॉलिड रीजन बताएं। मैं आज उस कोला कैम्ब्रिज से पूछता हूं, एक सॉलिड रीजन बताओ भाई कि मेरा गैस तुम अपने ग्रुप के उसमें चैनल पर अपने ग्रुप के अंदर क्यों नहीं डालने देते? कोई जवाब नहीं है। आप में से कोई मेरा साथ नहीं देगा, मुझे भी पता है इस बात का। ये है पाकिस्तानी कौम। एक बंदा जो गलत काम कर रहा है, जो बाकी तमाम कराची के टीचर्स और अकाउंटिंग के हैं उनको प्रमोट कर रहा है, लेकिन वो मेरा गैस ग्रुप में नहीं लगाना चाहता, आप उसके खिलाफ कोई नहीं बोलेंगे। मैं बोला हूं वहां पे बोला हूं, और वहां पे कराची के टीचर ने मुझे जैसे कहा कि सर कोई बात नहीं, जैसे कि वो ये कह रहे हो मुझे कोई बात नहीं, जैसे कि मैं कोई गुनाह कर रहा हूं। यानी दे आर बेसिकली लॉन्चिंग देयर ऑल एडवर्टाइजमेंट इन दैट ग्रुप, बट दे डोंट अलाउ मी। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अफसोस है, मैं क्या अफसोस की बात करूं कि हम अपनी इखलाकी इक़दार की किस पस्ती पे चले गए, अंदाजा करें। एक ही मुल्क के मेरा इसी तरह अदर साइड ऑफ द पिक्चर एक साइट है बेटा, क्रैक A level. I'm also telling to the teachers of they have been prepared by the students for the students, crack A level, and those students, I salute them, they have uploaded my lectures. A teacher who belongs to
Lahore. All the video lectures are uploaded of the teachers of Karachi or Islamabad, but only I am the only teacher of a site which the name of which is Crack A Level, where they have uploaded the basic lectures by Sir Haris Bhatt. My lectures are there. You can go and see them, see it. So there are good people also who are working for the right cause, but you are going to hardly see those people in Pakistan, unfortunately. So this is the reason that we are behind from all over the world, and we will remain like that. Why? क्योंकि हम किसी की अच्छी चीज की तारीफ ही नहीं कर सकते, तो भाई हमें अपने आप को चेंज करना है, एंड देन द थिंग्स विल डेफिनेटली चेंज फॉर द होल nation. So I'm going to go for the I will talk about the schools also, what is happening with them. I will also talk about the crisis we are facing, the problems in police and the problem in other sectors. I will discuss in my next video, and inshallah ta'ala I will upload the video and my number also. देखें, इमरान रियाज खान, अफान कैसर या कासिम अली शाह, मुझे बताएं कासिम अली शाह एक मोटिवेशनल स्पीकर है? यस, दैट्स फाइन, वेरी गुड. क्या काम किया उसने? लाहौर में रहता है ना वो. मुझे बताएं कि क्या ऐसा काम किया है कि हमारे माशरे में, बताएं, बिगाड़ पहले से बिगाड़ बढ़ा है, कम हुआ है? बड़ा है. ये सोशल मीडिया ने तबाह कर दिया है. अफान कैसर साहब डॉक्टर हैं, ही इज अ वेरी गुड डॉक्टर, ही इज अ स्पेशलिस्ट मेरे जिगर के, बट अब वो किस तरफ आ गए हैं? सोशल प्रॉब्लम्स की तरफ किस तरफ आ गए हैं? वो अपना डिजिटल उसकी तरफ निकल पड़े हैं, सिस्टोलॉजी की तरफ निकल पड़े हैं, बिकॉज व्यूज आते हैं, पैसों की सारी गेम है. इमरान रियाज खान बहुत बड़े, आप कहते हैं कि बहुत बड़े इंसान है, मान लेते हैं जनाब, वो अपने साथ किसी गरीब को जिसको इंसाफ नहीं मिला उसको बिठा के भी तो वीडियो बना सकते हैं. जितने भी आपके एंकर्स ज़्यादा सारे के सारे जो काम कर रहे हैं, ये उनको साथ बिठा के, जो गरीब लोग हैं उनको साथ बिठा के क्या वीडियोस नहीं बना सकते? क्या उनको हेल्प आउट नहीं कर सकते? अरे ये सारी पैसों की गेम है, और पैसों के हिसाब से इन लोगों को व्यूज मिलते हैं, और उसके हिसाब से आप लोग इन लोगों के साथ जो है वो लेकर अपने आप को लेके चल रहे हैं. तो इस पे सब पे हम इंशाल्लाह ताला बात करेंगे, और मैं अपनी आवाज़ इस पे उठाऊंगा और लोगों को इन्वॉल्व करूंगा अपने साथ टू स्टैंड अप फॉर द राइटियस थिंग. जुल्म सहने वाला और जुल्म करने वाला दोनों इक्वली गलत होते हैं. तो आपको चलना है, और इस चीज को वी नीड टू चेंज दिस ऑल टुगेदर विद हैविंग having a collaboration with each other. So thank you very much. Inshallah, see you in the next video, or hopefully I will be waiting for your WhatsApp messages from overseas, especially overseas students, so that I can give you the guests of February, March 2025. All variant, whatever variant you are going to go for, you can ask me. And I have told you that my classes are going to start, and I will go for all 10-year past papers along with the guests of February, March and May, June 2025 also. Inshallah, it will definitely come in the paper. Last thing which I want to share with you is that guess is just the important topics. Even my guess will come. So what do you think? The grade threshold will go up? No, it will still go down, because it doesn't make any difference. If the guess is come, if the topic has not been properly understood by you, if you haven't done all the past papers, it will be useless for you. छोटे बच्चों को जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो आप बताते हैं कि अलजबरा के ये सवाल इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकते हैं. प्रॉब्लम सिर्फ इसकी है कि कौन कितना एक्सपर्ट है, किसका कितना एक्सपीरियंस है, और किस लेवल पे जाके वो बना रहा है. सब बना सकते हैं, लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी की बात होती है ये वही गैस ही. ठीक है जी. तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही हैं, सिर्फ ये सब कर सकते हैं. सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट. You all were having these guesses for yourself, and you were giving these guesses also for others. लेकिन एक टीचर मैंने बताया जो 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, वो क्या गैस बनाएगा? उसका तो होल्ड ही किसी सब्जेक्ट पे नहीं होगा, बल्कि जिस सब्जेक्ट उसको आता होगा वो उसमें भी नीचे चले जाएगा, उसमें भी वीक हो जाएगा. तो ये सारी प्रॉब्लम है. सो इंशाल्लाह ताला hoping to work for you more and more in the future, and I want your support obviously. Thank you very much for all my overseas students and the students, my teacher assistant Fareed Hassan. I am thankful to him. Inshallah, he will be helping me out, and my other students, Subhani, Ahmed Subhani, 7up Shoes, and Hassan also, who is in Australia and working very well over there. He is having a computer business over there, and I have a very close relationship with my students all over the world. So see you next time. Thank you very much. Take care. God bless you.